किसी और की वजह से नहीं, बल्कि उन काल्पनिक बेड़ियों की वजह से जो हमारे सपनों को पकड़े हुए हैं, हमारे सपनों को जकड़े हुए हैं। आप जानते ही होंगे वो सपने कौन से हैं जो अधूरे रह गए, मगर शायद ये नहीं जानते होंगे कि वो बेड़ियां क्या थी। ऐसे में हरिवंश राय बच्चन जी की कविता तो खुद की खोज में निकल की दो पंक्तियां मैं आप सबके सामने पेश करना चाहूंगा। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक सपना देखा और आपको लगा हो कि नहीं, ये तो नहीं मैं पूरा कर पाऊंगा, ये तो नहीं मैं पूरा कर पाऊंगा। या कभी ऐसा हुआ है कि उस सपने को पूरा करने की हिम्मत ही थोड़ी कम सी पड़ गई हो? किसी ने रोक दिया था क्या? किसी ने टोक दिया था क्या कि ये तो नहीं कर पाएगा, इस संसार की अपार ऊंचाइयों को तो नहीं छू पाएगा? किसी ने रोक दिया था क्या, या आपने ही खुद को रोका था? A very warm welcome and good evening to all of you. I am Rishiraj Anand. And I am Shrey Sisodia, and we're all gathered here to be a part of the event No Limits, organized by Recoil. Did you know? Only 8% of people who dare to dream big actually achieve their dreams. And 92% of them are unable to fulfill their aspirations. And you know what was that one thing that was common among these 8% of people? Is that they were not afraid to take the first step, and they kept taking subsequent steps each day. And that's exactly what we at Recoil also believe in. So today we have a very special guest amongst us who went on the journey from being inspired to being an inspiration. The one who's a true definition of somebody who kept moving forward despite all odds. Let's welcome on stage a woman who knew no limits when it came to achieving her goals. A woman who paved path not just for herself, but for every woman out there keen on joining the Indian Army. An ordinary woman with an extraordinary story. Ladies and gentlemen, give a huge round of applause for Lady Cadet number 1, Major Priya Jhingan. Thank you. सबसे पहले तो I would like to thank you for these wonderful words that you spoke from Mr. Harivansh Rai Bachchan's poetry. So inspiring. और जो आपने बात की है shackles की, बेड़ियाँ, he was very right कि वो बेड़ियाँ जो है वो आपके jewels नहीं हैं. That is nothing that you should be very proud of. And we all know about कौन सी बेड़ियाँ होती हैं हमारी ज़िंदगी में. कोई बेड़ियाँ ऐसी हैं जो हम खुद उतार के फेंक सकते हैं, और कोई ऐसी है जो किसी और को फेंकनी पड़ती है. So my story is also about how to break through the shackles of life. I'll begin from the very beginning. मुझे हिंदी में बोलने की इंग्लिश में कॉम्बिनेशन जैसा आपको सही लगे. So I was a very naughty girl when I was young, and I thought that I was a boy, and I behaved like one. And so my dreams were also like that. We come from a very simple family in Simla, and a lot of inspirations were taken from TV, books, stories. तो हम लोग जब छोटे थे एक सीरियल रहा करता था जिसका नाम था उड़ान. Right? I don't know if दोबारा आता होगा वो कि नहीं.
So that was a true story of the second IPS officer, Kanchan Chaudhary Bhattacharya, who was the first Deputy General of Police later on. तो उनकी स्टोरी में जो हीरोइन थी कविता चौधरी ने पोर्ट्रे किया था, तो जब उसकी स्टार्ट होता था वो सीरियल, she used to wear her peacock, she used to clap her belt and perfectly polished shoes की laces बांधती. So देख के मुझे I was fascinated with the uniform. पापा was in the police, पर जब पापा घर आते थे तो मैं सेम उनकी बेल्ट पहनना, उनकी यूनिफॉर्म पहनना, कैप पहनना, जूते वैसे करके in front of the mirror I used to pretend to be an officer. I used to feel like that. Right from the beginning I had decided that I am going to don the uniform. फिर उसके बाद बड़े होते गए. If I could pinpoint the moment when I decided to join the Indian Army was in class 9. I was studying in Loreto Convent, Tara Hall, Simla. Class 9 में किसी फंक्शन में हमारे स्कूल गवर्नर आए और गवर्नर के साथ उनके ADC आए. ADC is a special officer who's seen with the governor on all occasions. And मुझे लगता है कि ADC के लिए requirement है to be very handsome. So the ADC who came to school was an army officer, extremely handsome army officer. तो गवर्नर कौन था, गवर्नर ने क्या बोला, कुछ नहीं पता क्योंकि हम लोग सब सिर्फ ADC को देख रहे थे. We were all just watching that handsome fellow there. And then functions खत्म हो गया and we went back to our classrooms. So when we sat there, the ones are saying, "Oh yeah, I'm going to grow up and get married to an army officer. I've decided I'm going to get married to an army officer." And I was just standing there. I don't know what snapped in me, and I stood up and I said, "Girls, excuse me, I'm going to become an army officer." So it was a very big deal. Big. Because there was a policy for women to join the Indian Army. Indian Army में महिलाएं थी ही नहीं. Anyways, स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज तक पहुँचे. जब कॉलेज खत्म होने वाला था, तो they had a sitting on my study table और तब employment news देखा करते थे हम लोग. तो employment news में advertisement थी for young men to join the Indian Army. I read through the whole thing. सब पढ़ा, requisites क्या, requirements क्या है. So I fulfilled all the requirements, except that I was not a young man. तो फिर क्या किया जाए? I felt कि कितनी गलत बात है. Why should only men be called to serve the nation? Why not women? And I was physically very fit. खूब दौड़ते थे हम लोग. सिमला के रहने वाले लोग वैसे ही बहुत चलते हैं, तो हम लोग नॉर्मली फिट थे. So I was thinking कुछ भी ऐसा नहीं जो ये लोग कर पाते हैं और मैं ना कर पाऊँ. So why can't I join the army? तो इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि क्या किया जाए. तो मैंने अपने नोटबुक से एक पेज फाड़ा और देखा ये एडवर्टाइजमेंट किसने दी है. इट वॉज ऑन बिहाफ ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी. मुझे नहीं पता वो कौन है, क्या रैंक है, कहाँ है, बट आई रोट अ लेटर टू हिम एंड आई टोल्ड हिम दैट आई वांट टू जॉइन द इंडियन आर्मी. And there are so many other women who must be wanting to do this. So अब कैसी पॉलिसी क्यों नहीं है? Why is this there, this discrimination, this differentiation? And then posted that letter. Now one random girl from Simla writing a letter to the chief of army staff. ठीक है? पूरी army headquarters है. वो क्या पढ़ेगी इस लेटर को? और क्या वो कहीं वापस लिखेंगे मुझे reply? I don't know what I was thinking. But he wrote that to me. 2 हफ्ते के अंदर मुझे आर्मी हेडक्वार्टर्स का लेटर आया और उसमें जनरल S.F. रॉड्रिग्स का इंक साइंड लेटर and he praised me for taking such a big step of approaching fearlessly to write to the chief and telling him what needed to be done. And he said, "See, this is a great step. One day it will happen. It will happen one day, पर अभी इसमें वक्त लगेगा. तब तक आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखो, look after yourself, prepare yourself." So then I decided कि चलो होगा जब होगा, I have to get ready for the army. तो मैंने एडवर्टाइजमेंट पे देखा कि अगर आप 26 साल तक के भी होते हैं
तब भी आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने लॉ की हो, right? Because then you can be commissioned into the Judge Advocate General's Department of the Indian Army. तो मैंने अपना पूरा trajectory of education change करके law में admission ले लिया. कि I wanted to buy time. मुझे नहीं पता था 1 साल होगा, 2 साल, कब तक होगा. By that time I was about 21. So I said 6 years मुझे मिल जाएंगे, right? So education-wise, I started studying law, and then I taekwondo की classes join कर ली, जहाँ पे सिर्फ boys थे, और उनके साथ जहाँ पे रोज जो fights वो करते थे, जो training वो करते थे, I started doing that with them. कभी tough training थी, वो बजरी के ऊपर शब्द कराते थे, that's why my hands are like much loose even till today. They used to jump from one stomach to the other. उनमें एक stomach मेरा भी रहता था. All the fights, because there was no other girl to compete करना है, train करना है, it was with them. So physically also I took care of myself and I started eating well. I was a very poor eater first. और फिर law भी खत्म हो गई. Still no policy. But I knew कि ये होगा. You know, Paulo Coelho says that if your desire is very strong, then the entire universe will conspire to make it happen. So I wished, my dream was so inviolable, so sacred, so strong. कि होना ही था. कब होगा ये नहीं मुझे पता था, पर होगा जरूर. I became an advocate. I started practicing. I hated being an advocate. I hated my life. And I was thinking, कब होगा यार, ये कब होगा? ऐसा ना भी मैं advocate करके रह जाऊँ. I studied law for some other reason. Anyways, I was getting used to being an advocate, and one day I was sitting in the bar room of the court, और वहाँ पे देखा एक full page advertisement है, जिसके अंदर एक outline of a woman in uniform, और उसमें लिखा हुआ है, "Within the army beckons you." I didn't even, when I'm talking about it today, I get so emotional because imagine somebody's dream comes true. I would let it happen to myself. And I still remember that feeling. I'm still going through that. Goosebumps, to numbness, to tears, to laughter, to pride, whatever. I was so happy, so happy. उसमें had 25 vacancies for women around the country, और उसमें से 2 थी for the Judge Advocate General's Department. So I applied for that, and the rest is history. 25,000 applicants ने लिखा था, applications भेजी थी. 250 of them were called for the service selection board interviews. जिसमें से 25 select हुई थी. And I am honored and full of pride to say that I was Lady Cadet #1 in the Royal Navy. So I got commissioned into the Judge Advocate General's Department, and yes, again, I was the first lady officer of the department, and I served. And it was an experimental commission. मतलब मुझे में 5 साल दिए थे कि आप देखते हैं 5 साल तक कैसे काम करेंगे, और उसके बाद we'll decide what happened. We worked very hard, because we had to prove ourselves. पूरी country का बोझ सा शोल्डर के ऊपर. If we do not perform, if we do not wear, पूरी दुनिया, पूरी country की women की नाक कट जाएगी. So we really worked very, very hard, even during the training. कोई तो ऐसा मुझे इसमें ट्रेनिंग में प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, बट देयर वर अदर वुमेन जो टीचर्स थी, जो कभी जिंदगी में भागी नहीं थी. they struggled so much, and everybody was commissioned, everybody completed the training properly. तो ये 5 years में भी हमने खूब काम किया अच्छे से अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, और फिर हमें another 5 years मिल गए. तो हमें पता था कि इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि आगे बड़े रहेंगे बेटा. But to my shock and surprise, 10 साल के बाद we were relieved from service. और पूछा कि क्यों? It was very simple. The terms and conditions were only for 10 years. They could have given us an extension, but the government as well as the chief had changed,
and they all just slept over the birds. Because जो next batch था, उनको extension मिली, उन्हें वापस बुला के extension मिली. So this was sad part, but I had lived my dream. So whatever I am today, whatever ethos, whatever characteristics, whatever I am today is because I was able to get the best out of my life in those 10 years. So, fortunately, I was absolutely rudderless. जैसे ship होती है बिल्कुल पानी में डिस्टर्ब कुछ नहीं पता कहाँ जाना है यहाँ से. Because I really dreamt about joining the army. I never thought of plan B or anything. यही था B. अब वहाँ पे बैठे पता नहीं अब क्या करूँ. I was married by then. I had a son, and I was absolutely rudderless. Anyways, I came back to Hisar. My husband was posted there. खूब jobs ढूंढे, सब कुछ किया, कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था. So I'll cut it short now. Every new station that I went to after that, I upskilled myself. कुछ और पढ़ाई की. I studied journalism and I became a journalist for a while. I trained a little and I became a personality development trainer. I was a guest lecturer in Lovely University. I did BEd and then I became a teacher in the Lawrence School Sanar. And finally, all this while my spirit of adventure was on. So I had climbing mountains, peaks, rafting, skiing, all these things. And finally, I joined Vector, which was my husband's company, Adventure and Travel. So I'm still doing that. And not only that, I take a lot of children from different schools on outings, on camps, and try to inspire them by telling them my story, by going ahead with them and doing what they can do or the thing that they cannot do and make sure that they are able to do it. So I am not in the army anymore, but I am still marching on. Thank you so much. आपकी जर्नी, आपकी bullsons, आपकी smiles, everything we were about to be. And like आपकी जर्नी इतनी खूबसूरत, अब काफी सवाल भी आए मन में. तो क्यों ना by the way, also Yeah, absolutely. I noticed. That's the first thing I noticed when I came. तो मेजर प्रिया जनरल मतलब मेजर प्रिया करने के लिए वो कहाँ से एटीट्यूड आया, वो कहाँ से फीलिंग आई कि हाँ ये तो मैं तरजीह दूंगी. तो आई इवन रेट योर बुक एंड उसमें भी एवरीवेयर दिस एटीट्यूड कि हाँ ये मैंने करना है, ये तो मैं तरजीह दूंगी. तो उसकी फीलिंग कहाँ से हुई? See, ये सबके अंदर है. You can do it, like you said in the beginning कि वो shackles जो हैं वो हैं. तो if you decide कि ये temporary है, ये इन्हें मैं निकाल के बेड़ियों को फेंक सकता हूँ, I have that power. That power is not only within me, that power is within all of us. It just depends when and how we decide to use it. तो मुझे ऐसा है कि मुझे कहीं से कोई रोक दिखी नहीं थी, except कि मतलब था ही नहीं, कोई policy नहीं थी. Not from my parents, not from the environment, from nowhere. There was only positivity कि जो करना है करो और अब क्यों नहीं कर सकते? What can stop you? You said it. It's one person who stops you every time. It's not age, it's not the environment, it's not what people will say, it's not what will happen if I fail. It's you yourself. You put a stop to it. So probably मैंने वो होने नहीं दिया. एंड आपका मैंने सुना था कि यू बचपन से लाइक आपका बहुत टॉम बॉयिश एटीट्यूड रहा. तो लाइक देखो वैसे तो जनरली होता है, तो मतलब पेरेंट्स बहुत रोक टोक करते हैं कि ऐसे नहीं ऐसा करना है. तो मतलब जब व्हेन यू वर लाइक कि अभी ये दिस इज मी, तो उस टाइम आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था मतलब उस रिगार्डिंग? You know, Rishi, I wish मम्मा पापा यहाँ बैठे होते हैं, वो सुनते ये वाली बात. They had such a big role to play in what I am today. और तब भी जब मैं बचपन में स्कूल में I used to behave like a boy only and there were lots of girls who would have crushes on me. और तब मम्मा वगैरह को हम ये ऐसी बातें बताते नहीं थे. But she knew that I behave like a boy. When I speak in Hindi तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ, not बोलती हूँ. ये बचपन से ये भी my sister does the same thing. But उन्होंने कभी नहीं बोला कि ऐसे नहीं बोलना.
मैं और मेरा भाई बहुत सारे उसके दोस्तों को पीट के घर आते थे. आई यूज्ड टू फाइट विद अ लॉट ऑफ बॉयज एंड मार मुर के आता था. उसके लिए डांट पड़ती थी, पर उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि ये तुम नहीं कर सकती और ये तुम कर सकती हो. नेवर. उन्होंने कभी नहीं मुझे इसके लिए रोका. जो मैं पहनता था शी लेट मी वेयर. इनफैक्ट वही तो ला के देती थी कपड़े. तो नेवर, कुछ नहीं ऐसा उन्होंने रोका नहीं. एंड इट्स ऑल द डिफरेंस. दे मेड ऑल द डिफरेंस. अगर वो रोक देते मुझे तो हो सकता है आई वुड हैव स्टॉप्ड, बट दे लेट मी बी अनस्टॉपेबल. एंड इसी रिगार्डिंग आपकी एक स्टोरी है कि फेयरवेल पे जाना एंड वाइट एंड रेड कलर की स्ट्राइप्स वाली ड्रेस डाल के. तो मतलब वो मतलब आई रियली वांट के सारे सुने वो स्टोरी. नहीं, इतना इंटरेस्टिंग ये नहीं है. मतलब फ्रेशर्स नाइट थी कॉलेज में. एंड यू नो हाउ गर्ल्स लाइक टू ड्रेस अप फॉर द फ्रेशर्स नाइट. वी वर इन प्री यूनिवर्सिटी क्लास. और कोई कोई तो पार्लर भी जा रहे हैं, कोई कोई तो किसी की न्यू साड़ीज. आजकल यू नो व्हाट ऑल हैपेंस. दैट टाइम ऑल्सो कुछ कुछ तो चलता था. So everybody is nicely decked up for the freshers night, and I went in a pair of white trousers and t-shirts, and I was very happy. I did that for a very long time, and like dressing up and all. Late when I started realizing, I think when I was 19, 20, that the girlish tinge came in and I changed a little. But काफी साल तक तो ऐसे ही trousers और shirt में निकल, आज भी वैसे ही निकल रहे. well, तो like जब आपके पास एक लेटर आई, क्या अभी हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में वुमेन की जगह होगी इंडियन आर्मी में, तो आपने उस लेटर पे इतना भरोसा कर लिया कि मतलब सारी होप्स जोड़ दी उसके साथ कि हाँ भी कोई नहीं यार, मैं तो करूँगी, अभी तैयारी करती रहूँगी, मुझे पता है हो ही जाएगा. तो मतलब इतना ज़्यादा आपने भरोसा एक लेटर पे कर लिया. The letter was written by the chief of army staff. एक जनरल रहता है इंडियन आर्मी में. He had written to me. वो झूठ थोड़े ना बोल सकते. How can he say something which he doesn't mean? And like I said, it's a combination of both. Your will, your wish, and yes, he validated it कि ऐसा होगा. तो हाँ, मुझे पक्का था होगा ही होगा. सिर्फ कभी कभी घबराहट ही होती थी ऐसा ना हो कि आई एम ओवर एज बाय द टाइम दिस हैपेंस. सो उसका भी मैंने ध्यान रख लिया कि लॉ कर ली कि चलो 26 साल तक तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा. लाइक आप बचपन में मैंने पढ़ा कि आप अपने फादर की यूनिफॉर्म डालते थे, एंड जिस दिन आपने अपनी खुद की यूनिफॉर्म डाली, उस दिन के बारे में मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा जानना चाहता हूँ कि हाउ वाज दैट फीलिंग एंड वो दिन कैसा था एंड क्या क्या हुआ उस दिन. सो यूनिफॉर्म तो खैर जब हम अकेडमी में जाते हैं तभी हमें मिल जाती है, लेकिन जब आप कमीशन होते हो तो दैट इज़ द टाइम यू वेयर योर प्रॉपर यूनिफॉर्म. और पेरेंट्स वर देयर. मेरे मम्मा पापा दोनों आए थे. चेन्नई में हुई थी मेरी ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में से पासिंग आउट हुई थी. तो मम्मा पापा आए थे और पापा ने एक स्टार, लोग स्टार्स रहते हैं और उनको ऊपर से रिमूव करना पड़ता है दिखाने के लिए कि स्टार्स है. उन्होंने ये रिमूव किए थे. और उसके पहले जब हमारी पासिंग आउट परेड चल रही थी, सो आई वॉज इन फ्रंट और स्वॉर्ड थी मेरे हाथ में. तो जब सल्यूट करते हैं मैंने यूं किया और माई आईज मेट मम्मा पापाज आईज. दे वर सिटिंग इन द फ्रंट रो एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट समथिंग वेंट थ्रू मी. और मुझे ऐसे लगा कि टुडे इज़ द डे. आजकल जितनी मैंने नॉटीनेस की है, जितने मम्मा को लोगों से परेशानियां कि मेरे बारे में शिकायतें आई हैं, वो आज सब खत्म हो गई. आई हैव मेड देम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. और उस एंड वर योर पेरेंट्स इमोशनल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? क्या मतलब आफ्टर इफेक्ट्स क्या थे कि हाँ भी? मम्मा ने एक इंटरव्यू में बोला था कि पहले मैं देखती थी कि मेरे हस्बैंड यूनिफॉर्म में है और फिर मैंने देखा मेरी बेटी यूनिफॉर्म में है. तो उनके एग्जैक्ट वर्ड है कि मुझे बहुत फक्र हुआ. दैट्स हर डायलॉग. सो ऑफ कोर्स वहाँ पे यूनिफॉर्म पहन के इट्स अ डिफरेंट फीलिंग. मुझे ऐसे लगता है कि तब ऐसे लगा कि सी आई वॉज बोर्न टू वेयर दिस यूनिफॉर्म एंड इट हैज़ हैपेंड. सी अभी इस टाइम पे आई एम इन टोटल गूज़बम्स. एक मतलब बहुत ही मतलब आउट ऑफ द बॉक्स मेरे दिमाग में ना बहुत सवाल है कि इफ नॉट आर्मी देन व्हाट? इफ नॉट आर्मी देन द आर्मी. आपने जब डायलॉग बोला लाइक ये किन का लिखा हुआ है कि अगर किसी भी चीज को पूरी शिद्दत से चाहिए? हाँ, ये है पाउलो कोल. पाउलो कोल. तो वो वाली मूवी है ना, उसके अंदर शाहरुख खान ऑल्सो यूजेस द सेम डायलॉग.
कि किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से जाओ कि पूरी कायनात भी उसे मिलाने में ओम शांति हो। दैट्स राइट। मैं बचपन में वो बहुत डायलॉग मारता होता था, बट फील आज कर रहा हूँ कि व्हाट वाज दैट डायलॉग एंड उसको इम्प्लीमेंट करना कैसा रहता है। Another thing I must share with you all कि जब ये सब हो रहा था तब नहीं मुझे पता था कि it will become so big। तब नहीं इतना पता था, तब तो लग रहा था आप छोटी सी चीज़ कर रहे हो। I never realized that it will become snowball into such a huge thing। और तब पता नहीं इतनी strong feelings होती है। Now when I go back and I realize कि see it happened because of these feelings, it happened because of such emotions, such strength। मेरे पास अभी like I'm so emotionally overwhelmed and get to So be am very I। honest, मेरे पास कोई So am I। पूछने को भी कुछ रह नहीं गया। So I would really like अगर ऑडियंस में से आपसे कोई कुछ पूछना चाहे। Please। When you said and also associating yourself being a man, so feel both the emotions at the same time. What is that one most important thing for women to grow in their life? What is that one key thing that relation purposes so that they keep going? Yeah, I cannot give gyan for everybody else. Everybody has a different journey, everybody has a different background, different baggage. सबका अलग तरीका रहता है. So I cannot advise others what to follow. But for me, it was very simple for me because I had focused on what I wanted. तो मेरा focus कहीं deviate हो नहीं रहा था. It was only on one thing, and it is the greatness of God that He made it happen in such a way. He's asking me, अगर ये नहीं हुआ तो मैंने सोचा ही नहीं है कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता, right? So I'm really not the right person to advise others. I can just talk about my life. I think I have another question. Yes. I'll speak in Hindi only. Yes. So most of the time ऐसा होता है कि आपके dreams बहुत बड़े-बड़े होते हैं and आप पूरी मेहनत करना चाहते हो उनके, but you get demotivated at times. Things don't turn out the way you want them to turn out. So you do get demotivated and most of the people quit because of that. So how did you keep yourself motivated and you became what you became and you inspired so many people. You opened the gates in the army for women. So how do you keep yourself motivated when motivation is absolutely zero? Okay, I'm going to tell you a little story about there were these turtles who had to race up till the Eiffel Tower. Okay, so they start running and they keep running. आधे में बोलते हैं अरे रुक जा, कहाँ जा पाएगा, बहुत ऊंची आईफिल टावर, रुक जा, थोड़े quit कर देते हैं. Then they keep walking, they keep running. Then people say अरे it's become so hot in the day, रुक जा, कहाँ जाएगा, छोड़, थोड़े से और आ जाते हैं. Then they start climbing. There are 5-6 still climbing. बोलते कहाँ जाएगा, ऊपर से गिर जाएगा, you will die, छोड़. एक दो और निकल आते हैं. There's only one turtle who's able to go to the top. And then they call him and ask him, कैसे किया आपने, कैसे किया? He says, All right. So he couldn't hear what people are saying. In my case, I was very lucky. मुझे किसी ने demotivate नहीं किया कि तुम नहीं कर सकते हो, नहीं किसी ने बोला ही नहीं. Also, I hadn't shared this with a lot of people. What I was doing was my internal story, internal journey. Only my sister knew and मम्मा पापा को थोड़ा सा आइडिया था. बाकी किसी को इतना खास पता भी नहीं था कि हो क्या रहा है. But to keep yourself motivated, you have to realize just one thing. Yesterday is gone. You're not going to get it again. And tomorrow might come, might not come. Today is called the present because it is a gift. That's why it's called the present. Today is all you have. So whatever you have to do it today. That is the maximum motivation. कि कब नहीं, आज नहीं करोगे तो ये भी निकल जाएगा. So you've got to keep yourself motivated. Another way I keep myself motivated is there's a picture of mine which they showed here where I'm wearing a rucksack and I'm climbing a mountain peak. That's in my room and I just have to look at it and just say if I can climb this, I can do anything. कि मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ. इफ़ नॉट आर्मी देन आर्मी. तो आपने उस टाइम सोचा कि हाँ भी मैं सर्कमस्टांसेस को अपने हिसाब से ढालूंगी? नहीं, सॉरी, आई डिडंट गेट यू. आपने सोचा कि उस टाइम मतलब आपके था कि हाँ भी जैसे मेरे सर्कमस्टांसेस हैं मैं अपने हिसाब से ढालूंगी. इफ़ नॉट आर्मी देन आर्मी, मतलब आपने उसके हिसाब से कुछ सोचा ही नहीं. बट आफ्टर 10 years ऑफ कमीशन जब आपको रिलीज़ किया गया
तो उस टाइम मतलब आपने क्या व्हाट वाज द फीलिंग लाइक योर फ्रेंड सम ऑफ योर बैचमेट्स उनने केस किया इंडियन गवर्नमेंट पे एंड व्हाई नॉट यू? सी एक फर्क था उनमें और मुझ में। ऐसे मेरा ये ड्रीम था और ये सच हो गया था, राइट? द आर्मी वॉज नॉट लाइंग टू अस। उन्होंने जब लिखा था एक्सपीरियंस, दे वर गोइंग टू डू एन एक्सपेरिमेंट 5 years and extended to 5 years. This is what they promised, isn't it? And this is what they gave us. If you're reading between the lines and you're saying, I want more, then it's okay. Even I wanted more. But this army, which had given me whatever I wanted in my life, I was what I am because of that. How could I drag it to the court and question it? I loved it too much to disrespect it by taking it to the court. I was a judge. How could I judge the own army in the court of law? Never. That's why I never took it there. I was hurt. I was pained. मुझे बहुत बुरा लगा था. I was lost. But I didn't blame the army for it. वो थी, it was terms and conditions were specified. कोई उन्होंने झूठ नहीं बोला था, कोई उन्होंने चेंज नहीं कर ली थी terms and conditions. तो जब आपका लास्ट डे था इंडियन आर्मी में, उसके अगला दिन कैसा गया होगा आपके लिए? मतलब व्हाट वर द थॉट्स, अगर आपको मतलब इफ यू रिमेंबर देम? See, I remember that day itself. My husband and my son, they came to office with a bouquet, and I said bye-bye, came back, then he took us out for dinner, and I did not enjoy the dinner at all, because I was thinking, abhi kya hone kya wala hai? How is anything, I mean, what am I to do next? Packing karna hai. I was in Chennai that time. Posting ho gayi hai, wahan se nikalna hai. What about my house? I had an entire life behind me. What now? So I was in a daze. And that daze continued for almost 3-4 months. जब मुझे पता ही नहीं है, and then I decided, okay, wake up, कुछ करना है. तो मैंने जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया. दैट वाज हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज. फिर पढ़ाई करनी शुरू कर दिया, फिर पूरा फोकस वहाँ पे लगा दिया. स्टडीड फॉर कपल ऑफ मंथ्स, चंडीगढ़ आए, एग्जाम क्लियर किया, आई गॉट सिलेक्टेड, बट आई डिड नॉट ज्वाइन बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू स्टे इन हरियाणा फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. आई सेड मुझे ट्रैवल करना है, घूमना है, लेट मी सी समथिंग मोर. सो देन आई मूव्ड आउट फ्रॉम देयर, एंड लाइक आई सेड, न्यू स्टेशन, न्यू जॉब, न्यू स्किल, न्यू एजुकेशन, न्यू डिग्रीज. इट कंटिन्यूड लाइक दिस. कितनी कंट्रीज अभी तक ट्रैवल कर रहे हो आप? मैंने बहुत सारी कंट्रीज ट्रैवल कर ली हैं, बहुत सारी. ओके, एंड मतलब वन ऑफ योर फेवरेट कंट्रीज अगर पूछा जाए तो? My favorite countries, yeah, every time you go to a new country you feel it's very nice, but there is this place called Kazakhstan. It is very beautiful, और सबसे मज़े इसलिए ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि हमारी करेंसी बड़ी वहाँ पे ज़्यादा होती है. You can spend a lot of money, and it's got very beautiful women and very neat and clean, cultured. बहुत अच्छी जगह. अच्छा, तो जब लाइक आप एक लाइन हमें बताओगे कि इस टाइम मैं सोच रही हूँ कि ज़िंदगी को मैं अपने हिसाब से ढालूंगी, फिर एक टाइम आता है कि हाँ भी ज़िंदगी लगता है कि हाँ भी अगर मैं अब ढालने की कोशिश करूँगी तो टॉक्सिक हो रही होगी, तो उस टाइम ज़िंदगी के हिसाब से ढल जाना, जैसे आफ्टर योर कमीशन एंडेड, उसके बाद आप ज़िंदगी के हिसाब से ढल गया, आपने नया पार्ट ढूंढ लिया, तो क्या लाइन है कि हाँ भी मेरे को इसी पाथ पे चलना है, चलो अब मैं कुछ अलग देखती हूँ, वो क्या लाइन होती है? सी लाइन का तो मैं आई डोंट नो. एक तो था कि जब तक ये नहीं होगा तब तक तो यू विल ट्राई, राइट? और जब वो हो गया, आपने उसको जी लिया अच्छे से, देन इट्स ओके टू मूव ऑन. ऐसा तो नहीं है कि आपने बीच में छोड़ दिया और फिर चेंज कर लिया. यू लिव्ड इट. आई लिव्ड अ ड्रीम फॉर 10 years, and then it was time to move on to another dream. ऐसे. अब इसके बाद कौन सी कंट्री में जाने के प्लान हैं? नहीं, कंट्री जाने का प्लान नहीं है अभी. तो आई हैव टू शेयर माई लाइफ विद सो मेनी अदर स्टूडेंट्स, विद सो मेनी नो. आई ट्रेन नाउ, तो ट्रेनिंग में कितना कुछ पास ऑन करना है सबको, वट एवर सर्विस, वट एवर country has given us, whatever experience has given us, so like to share it with others and give back to the society like that.
कंट्रीज विजिट करना इज़ नॉट अ बिग थिंग, इट्स जस्ट बच्चों के साथ ट्रेनिंग में ये उन तक पहुंचाना, टू पास ऑन दिस फीलिंग टू देम. And anything you would like to say on always keep moving forward and like आप क्या आपकी लाइफ में सच में लाइक ऐसा रहा कि हाँ मेरे को अचीव करना था, इसके लिए मैं लिमिट्स नहीं रखूँगी एंड आई हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स इट डेली थोड़े स्टेप्स ले के सो वो इंस्पिरेशन कहाँ से रही हमेशा? ऋषि, एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आप पीछे तो जा ही नहीं सकते हो. यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड. पीछे कहाँ जाएंगे आप? That's the only way, you all know. That's the only way in front of us. You cannot go back. Inspiration has to come from within. When you tell yourself that, yeah, that is the way, that is where I have to reach, I have to move on. It's as simple as that. Don't give yourself that option. Quitting is not an option. And then when you tell yourself this, your heart starts believing. You know what we keep telling our brain? We bind our mind with thoughts of failures. Failure of... we keep off with fear of failure, fear of consequences. उसको इतने डरा के रख देते हैं हम that it starts believing that it is not capable of doing what your heart desires. ऐसा बना देते हैं हम उसको. But the funny thing is it works absolutely the same way in the opposite direction also. If you tell it कि ये हो सकता है, ये हो जाएगा, मैं कर लूँगा, हो जाएगा, it starts believing like that. So it is all a question of binding your mind. हाँ मतलब मेरा तो खत्म नहीं होंगे क्वेश्चंस वगैरह. आई एम सॉरी मैं इतना ज़्यादा हो गया था, मुझे लगा मैम और मैं ही हैं. सो एनीवन प्लीज. Ma'am, wonderful, so inspired by your journey so far, and the way you shared, it actually gave goosebumps, like you said. And my question is, I can see the army and the practice that you also communicated. Live communicate today. Then Mount Kilimanjaro, where they say cutthroat Kidari, there's a pattern there. And I don't understand if there are some values, some patterns, some behaviors that it would very clear and we have taught from the army, which you practice on a daily basis, or which you hold very dearly, which help you keep going on the way. Thank you so much for this question. So there are so many lessons that I've learned from the army which keep me going. First lesson is that there is no such word as fatigue. ठीक है? कोई ऐसी चीज़ नहीं है. जो हमारी बॉडी है, जो हमारा माइंड है, it is capable of continuing without food, without rest for much longer than what we feel. You have to keep challenging it. हम चैलेंज करते नहीं हैं. हम सोचते हैं रात हो गई तो नींद आई है, दोपहर हो गई तो भूख लगी है. Challenge it and you will realize the strength in you. That is number one. Number two, what the army taught me is you can't give up. There's an incident I would like to quote here. My first day in the army, ठीक है? First day हम लोग academy पहुँचे और uniforms वगैरह distribute हो गई हैं and slight pain start हो गई मेरे abdomen में. ये क्या होगा यार, क्या होगा? थोड़ी देर बाद और पेन, फिर और पेन. आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन. छोटी मोटी पेन से मुझे कुछ घबराहट होती नहीं है. बट इट स्टार्टेड ट्रबलिंग मी अ लॉट. इतना हो गया कि बाय द इवनिंग आई हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड. फर्स्ट डे एंड आई एम इन द हॉस्पिटल और मुझे इतना गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर कि देख भाई, यू रीच्ड हियर एंड नाउ यू लैंडेड इन द हॉस्पिटल, शेम ऑन यू. तो जब डायग्नोसिस हुआ तो था स्टोन्स इन द किडनी. आई हैड नो क्लू वो कहाँ से आए, कब से थे, क्या था. बट ये भी पता चला कि अगर आप हॉस्पिटल में 5 दिन से ज़्यादा रह जाते हो तो आप रेलीगेट हो जाओगे. दैट मीन्स यू विल नॉट पास आउट विद दिस कोर्स. व्हेन आई गॉट टू नो दिस आई वाज टोटली, आई वाज लाइक, उठ जाओ और निकलो यहाँ से. सो आई वेंट एंड टोल्ड माई डॉक्टर आई एम एब्सोल्युटली फाइन, देयर इज नो पेन, नथिंग. So he understood what was going inside and he said, okay, ठीक है, I'm giving you painkillers, drink a lot of water and medication दे दिया, go back. When I went back, तो सारी girls basketball खेल रही थी और I stood there. मुझे लगा कि अगर मैं खेलूँगा तो ये stones भी उछलेंगे. So I can't play now and I was cursing myself. What have I done now? What is this happening? And I was dejected. बहुत दुख हो रहा था अपने लिए, बहुत शर्म आ रही थी. Came back. The next morning we had a 2.5 kilometer run. PT के लिए रिपोर्ट किया तो उन्होंने बोला 2.5 kilometer run. Start running.
तो जैसे whistle started blowing, I started running. And I wasn't very mindlessly, I'm running, दिमाग कहाँ जा रहा है कि मैं, I was so fit when I was doing taekwondo, I was so agile, I was so fast. And look at me now, these stones are going to, slow me down in life. भाग रहा हूँ, सोच रहा हूँ, भाग रहा हूँ, सोच रहा हूँ. फिर देखा यार मैं हूँ कहाँ? Where am I? I stopped and I turned back and I saw जनता पीछे है, इतने पीछे. And then like Oprah would call it that aha moment in life. I realized, bro, you are running, and not just running, even in your normal speed, without putting in your best effort, you are far beyond the rest of them. And then I just do 1, 2, 3, and I ran. That I write in my book, I broke the shackles. If you've seen Forrest Gump makes scene where he's running and he has these prosthetics, and he's not able to run, and uske piche the bullies keep coming and he runs. That is what was going on in my mind that time. Bloody stones, go to hell. I am running. And then I ran with so much conviction, and I never looked back. I continued to be the fastest runner in my batch, and I beat so many boys also later on. But then I realized giving up is not an option, and that remains with me till today. These two, and the third I want to say is dependability. If you've been given a task, you will, pardon me, bloody well do it. Right? फौज में सिखाते हैं do or die. So if you haven't done that job, then you should be dead only. इसीलिए नहीं कर पाए हो. When you take on a job, no matter how difficult it is, but when you've committed that I'm going to do it, then there is no justification, nothing at all, no clarification, no excuse for not accomplishing, not completing that mission. These three messages I carry with me all the time. Thank you. Okay. Because you should after it, so there's a very strict commando training when it comes to where your boss. No, I have not done the commando training. When we started, we had this basic military training which all army officers do. Commando training is meant for officers who go for infantry. So that is a specialized training for them, not for me. No, but I must tell you here that when I was commissioned, and not into the infantry, I went to the commander and told him I want to join the infantry. Why not? I says, abhi yahan pe kara lo push-ups, jitne karane hain, you see, if he can, so can I. So he told me, Priya, not you, but someday your granddaughter will definitely be able to join the infantry. You reminded me of my friend I had to bed in soon what the trainer there, and I saw the training company. It was something else. Very tough. Very difficult, and we were there, and the cadet and the commanders have already run for they had the 30-kilometer run in the morning to the boot storm, and they were doing an exercise with all the move on road. Jumping in the pool and yes. So there's this typical exercise, I think Nana Patekar. Hanji, correct, yes. Bilkul. And then because he was the officer in charge and he was doing it. सारा कुछ बताया कि ये होगा ये होता है and he सकी गए थे about 1,000 kilometers that he was that why इन सब की जरूरत ये पड़ती है जो these things and all those things you will follow. तो जो आपने अभी बोला कि there are your body does some limits are in the mind. Absolutely. So you reminded of that. Thank you so much. Thank you so much. We have another segment. We've eagerly waiting since so long to ask. Thank you. बेटा बहुत इंस्पायरिंग आपकी जर्नी मोटिवेशनल. एक मुझे जानना है जिस लेटर की आप इतनी शिद्दत से इंतजार कर रहे थे और उसके लिए आपने लॉ करना सोचा और लॉ खत्म हो गई तो उसके बाद भी वो लेटर नहीं आया था अभी और लॉ खत्म होने से लेकर भी वो लेटर के आने तक का कोई पीरियड था वो जैसे एक्चुअली सिस्टर हो गया. हाँ जी श्योर सर. लाइक आई सेड वो मेरे लाइफ के सबसे गंदे दिन थे. आई वुड कम बैक फ्रॉम मुझे कोर्ट जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. आई डिड नॉट वॉन्ट टू बी एन एडवोकेट. पर अभी जब पापा ने बोला कि चलो अब आपकी वो इंटर्नशिप शुरू होगी मैंने बोला मुझे जाना ही नहीं है इसे तो फिर लॉ क्यों की है.
लॉ की पढ़ाई की है. देन आई टोल्ड हिम कि मेरे को फौज में जाना है. बोला जब होगा तब होगा ना, यू कांट कीप सिटिंग एट होम. चलो. तो वो मुझे जो हमारे एडवोकेट जनरल थे उनके पास ले गए और वहाँ पे आई वॉज इज जूनियर मोस्ट जूनियर, बाकी 6 और जूनियर भी थे. एंड आई यूज टू गो देयर, आई यूज टू कम बैक होम. मैं घर आके आई यूज टू क्राई. रोता था मैं कि मुझे मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैं कहाँ फंस गया हूँ. फिर वही मम्मा पापा हैड टू डील विद इट कि बच्चे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा. पर एनीवे अभी जो ये है इसको तो ठीक से करो. तो उन दिनों में बस यही चला रहता था कि सुबह उठ के आज कुछ आएगा, रात को रोए कि कुछ नहीं आया. फिर सुबह उठ के आज कुछ आएगा, रात को कुछ नहीं आया. सो दोज वर वेरी टायरिंग एंड ट्राइंग टाइम्स फॉर मी. आई मेंशन देम एज द वर्स्ट डेज ऑफ माई लाइफ. 6 महीने थे वो सिर्फ लॉ खत्म करने के बाद और ये लेटर आने के बीच में सिर्फ 6 months. सो आई प्रैक्टिस्ड लॉ ओनली फॉर 6 months. उतने में भगवान जी ने सुन ली. So how difficult was it to be staying a mother and analytically peace? So it's all about restoring equilibrium, right? I remember when my son was born, I had got 2 months of maternity leave and there was something called 2 months of furlough. You could take that. That's pay without half a pay. And I was in Simla with my parents. 2 महीने खत्म हुए थे and I was called back. Furlough was cancelled. So when I went back, I have to go to office the next day. और ये बच्चे का मैंने करना क्या है? Who's 2 months old? I did not know what will happen. मुझे नहीं पता. I had got a new house. उसको किसके पास छोड़ के जाना है कुछ नहीं मेरे आइडिया में था. And it was all God sent. One family came to me, husband, wife और बच्चा. And they said कि we need a house, servant quarter. We will take care of the child. We will take care of the house. वो आ गए और उन्होंने मेरा बेबी बिल्कुल for the next 1 year, they looked after the child thoroughly. So I was able to concentrate in office, and when I would come back home, I was able to concentrate totally on my son. And I remember once they told me कि आपको जाना है exercise पे, तो you will be gone for about 2 weeks. What have you decided about your son? मैंने कहा कोई बात नहीं, उसके भी कॉम्बैट्स मैंने बनवा दिए, वो भी कॉम्बैट्स पहन के चलेगा साथ में. बट वेन यू हैव डिसाइडेड कि यू डोंट हैव एन ऑप्शन, कुछ ना कुछ आपको इलाज करना पड़ेगा. एंड यू वी बी रब दिस ऑन टू योर चाइल्ड ऑल्सो. उसको भी समझ आने लग जाती है कि ड्यूटी ड्यूटी है और घर पे घर है. तो वो बच्चा भी बेचारा 3 years की एज से यूनिफॉर्म पहन के ऑफिस में सेंट्री ड्यूटी देने आ जाता था. ही यूज्ड टू डू दैट. He used to wear कैप्टन का रैंक और वो अपनी ड्यूटी करता था ऐसे. But tough times भी थे when I had to go for a court martial. And that means I would be gone for maybe 2 months at a time, 3 months at a time. So I used to carry him, his suitcase, his toys, सब कुछ उसका साथ लेके न्यू स्टेशन पे. वहाँ पे you get help. वो दिन में उसका ध्यान रखते थे. Evenings I would be with him. Family support. My mother would come. My husband's mother would come. So everybody helped in the support. They supported us. That's how I could make it happen. And we all know that we are capable of making that balance. We are capable of doing that. Women have this inbuilt balancing beam in them. We manage so many things. You manage your career, you manage your husband, you manage your in-laws, you manage your parents, you manage children, education, fun time. So we are able to do that. We are blessed. I think हो गया होगा. Okay. First of all, good evening, Music here. evening. सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है. और मैं थैंक यू मैं बोलना चाहूँगी इसलिए क्योंकि जब भी कोई औरत अपनी पहली बार कोई चीज़ करती है वो सिर्फ अपने लिए नहीं करती पर बाकी सारी औरतों में एक इंस्पिरेशन बन जाती है और हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटीज अनलॉक करती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. Thank you so much. तो जब मैं अपनी स्टोरी के बारे में सुन रही सो मैंने पढ़ा भी तो दिस ऑल्सो रिमाइंड मी ऑफ सुधा मूर्ति. जब सुधा मूर्ति एक इंजीनियरिंग कॉलेज में गई थी तो उन्होंने बोला जो वहाँ पर मैन थे ज़्यादा और तो मेरे प्रोविजन्स भी नहीं थे. फिजिकली आप फर्स्ट बैच में थे तो वहाँ पर ऑब्वियसली मैन के ज़्यादा नीड्स से थी, फैसिलिटीज़ थी. तो एक तो पहली बात तो ये क्या वो एक्सपीरियंस कैसा था
be the first batch of women जब वहाँ पे pictorial style नहीं होगी आपके लिए। और दूसरी बात सोसाइटी में सस्पेक्टेड रिमार्क्स बहुत रहते हैं, मतलब नहीं कर सकती औरतें हैं, ये क्या आर्मी में जाएंगी। आई एम श्योर उस टाइम पे भी इस तरह की चीज़ें रही होंगी, तो उस टाइम आपने इन चीज़ों को कैसे टैकल किया? How were you able to break free and do this? So I'm going to give you 2 examples now. First of all, मेरी लाइफ में किसी ने मुझे ऐसे नहीं बोला कि तुम क्या कर पाओगे, क्या कर सकोगे, बोला कि ये तो करना ही, ये तो कर लेंगी, ऐसे ही बोलते थे। मम्मी की फैमिली हमेशा ये बोलती है कर लेगा सब। ऑफ कोर्स फेमिनिस्ट रिमार्क्स से मुझे एक इंसिडेंट है, व्हेन आई वॉक टू माई ऑफिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन यूनिफॉर्म, तो जो सेंट्री था ड्यूटी पे उसने मुझे सल्यूट नहीं किया। जो आगे पीछे जा रहे थे वो सबको जय हिंद साहब, जय हिंद साहब। व्हेन आई वॉकड इन, कोई जय हिंद नहीं, कुछ नहीं। मैं बोला यार क्या यार, इस जय हिंद के लिए तो यूनिफॉर्म पहनी है, ये बिल्कुल ही। सो ही डिडंट डू एनीथिंग एंड आई वेंट टू माय ऑफिस, बैठा, वापस आया शाम को। दिस केप्ट ऑन ट्रबलिंग मी कि ये तो ठीक करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट डे व्हेन आई वेंट देयर, अच्छा अगर मैं उस सेंट्री को रिपोर्ट कर देता तो उसका कोर्ट मार्शल हो जाता कि व्हाई इजंट ही सल्यूटिंग एन ऑफिसर, इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस इन द आर्मी। तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। व्हेन आई वेंट बैक द नेक्स्ट डे टू ऑफिस, वो खड़ा था सेंट्री, मैंने उसको बोला जय हिंद उस्ताद, तो बोला जय हिंद साहब, गुड। फिर आई वेंट इनसाइड, ही डिड नॉट सल्यूट मी बट ही हैड टू रिटर्न माई सल्यूट। वो नहीं, उसको नहीं वो कर सकता था रिफ्यूज। सो आई डिड दिस सेकेंड डे, थर्ड डे, जय हिंद उस्ताद, जय हिंद साहब, जय हिंद उस्ताद, जय हिंद साहब। 6-7-8 दिन बाद हम अंदर गए, उसने बोला जय हिंद साहब, I said जय हिंद उस्ताद। So it happened next time. And talking about facilities, see this is also one such thing, they were not prepared for us. अब जब आप वहाँ पे गए हो, वहाँ पे कोई विमेन टॉयलेट्स ही नहीं थे, ठीक है? तो ये नहीं यार, दिस आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दीज थिंग्स, आई हैव वर्कड फॉर दिस, आई हैव ड्रीम्ड फॉर दिस। अब ये छोटी छोटी चीज़ें से थोड़ा ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है कि वहाँ पे टॉयलेट्स नहीं है तो ढूंढो यार। तो फिर ढूंढा गया, एक दिन रेकी की गई कि यार ढूंढना तो पड़ेगा, कोई ना कोई तो होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई सिविलियन स्टाफ भी था, उसमें विमेन थी। तो देखा गया कि ये स्टैंडिंग यूरिनल है, ये भी स्टैंडिंग यूरिनल है, ये भी स्टैंडिंग है। फिर देखा गया एक स्टैंडिंग यूरिनल के पीछे भी एक दरवाज़ा है, वहाँ देखा ओहो दिस इज़ फॉर द विमेन। बट men never used to lock the door only. That was also a problem. तो उसकी भी एक वो बनाई गई कि पहले you go to the toilet, जोर से बोलो knock knock anybody. If he says yes I'm inside, तो फिर वेट करते रहो। फिर जब वो बोला नहीं बोला तो अंदर जाओ, उसको लॉक करो, फिर अंदर जाओ, फिर उसको लॉक करो। So it was okay. छोटी छोटी चीज़ें तो you have to be prepared for. These are minor things. इसको इतनी बड़ी ड्रीम के आ गई, I never gave any importance to such. ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी नहीं वुमेन के लिए। But then I wasn't there to be a woman. I was there to be an officer, and they were catering for officers. So लास्ट में मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा, अगर कोई एक ऐसा कोट, कोई ऐसी एक चीज़, 2 लाइनें हो जिसने आपको ज़िंदगी में हमेशा मोटिवेटेड रखा, आप हम सब के साथ शेयर करना चाहें तो। So ये हमारे the school that I was working in, उसका भी motto यही था, it is never give in. Never give in means never give in to anything, not to your weaknesses, not to other people's comments, not to distractions, not to failure, not to being judged. Just don't give in, carry on. So these 3 words mean a lot to me. They have in so many ways made my life what it is. Never give in. Thank you so much. Thank you. I got the opportunity to have a conversation with you. Thank you. I got the opportunity to have a conversation with you. Thank you, sir. Thank you. He's somebody who tells us that it's okay to make mistakes, but learning from them and moving forward is what really matters. So, ladies and gentlemen, I would like to request Mr. Vipul Gupta to come on the stage. He's the founder of Requil, and followed by a vote of thanks. Thank you so much.
And a gift for you too. Yeah, this is for you. Thank you so much for having me here. Vipul sir. Thank you, Major Priya. It was truly, truly inspiring, and I'm sure, like me, everyone here is feeling so privileged to hear your story. And मैंने तो बहुत कुछ सीखा और मेरे लिए तो इतने सारे choking moments थे आज. I was almost in tears listening to your story. It's a story full of faith. एक इतना स्ट्रॉन्ग फेथ जो आपने अपने ड्रीम में रखा, जिसकी वजह से आपने इंडियन आर्मी की पॉलिसीज़ ही हिला दी, पॉलिसीज़ ही चेंज कर दी. आई थिंक हम लोग अपनी, जब भी हम ड्रीम्स की बात करते हैं और वो जो शैकल्स, बेड़ियाँ हमारे पैरों में आ जाती हैं और वो हमारे जर्नी को स्लो डाउन करती है, क्योंकि हमारे में वो फेथ शेक होता रहता है, बार बार डाउट आते रहते हैं. आपकी जर्नी सुन के, आपकी स्टोरी सुन के लगता है कि नेवर गिव अप. कभी भी अपनी उन बेड़ियों को अपनी कमज़ोरी मत बनने दीजिए, उनको पिघला के अपने शस्त्र बनाइए, जैसे कि पोम में. So truly honored to have you here. Thank you so much. Thank you so much. Privilege is mine. Thank you. And I would like to thank Ojas. Because of her, we got a chance to have you here amongst us. And truly inspiring, and I'm sure everybody will feel so motivated and look at their lives and their dreams in an all new perspective. Thank you so much. One thing I would like to request is that there is a feedback form within your diaries, like I hope everyone is having. And it also has a surprise inside the envelope. Please take a moment once you are home, give it a read and fill out that for yourself. Thank you so much, everyone.